दाहोद जायडस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की पहली बैच की फर्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन हुआ। ये खबर दाहोद से सामने आई है, जहां की जायडस अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज की साल 2018 की पहली बैच की फर्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन जायडस मेडिकल कॉलेज पर करवाया गया था। पहली बैच में 150 में से 147 छात्रों का कॉन्वोकेशन हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान हेल्थ कमिश्नर अतिथि विशेष के तौर पर मौजूद रहे थे, तो वहीं जायडस फाउंडेशन के चेयरमैन डायरेक्टर कीर्ति पटेल के साथ साथ जायडस के सीईओ संजय कुमार, डीन और साथ ही अन्य प्रोफेसर्स की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। उपस्थित सभी की ओर से छात्रों को आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई थी। 2018 અમે લોકો અહીંયા ડૉક્ટર બનવા આવ્યા હતા. જ્યારથી અમે નાના હતા ત્યારથી અમે જોયું હતું કે ડૉક્ટર્સનું સોસાયટીમાં કેટલું રિસ્પેક્ટ હોય છે અને એ લોકોને કેટલું માન આપવામાં આવે છે અને કેટલું મદદગાર હોય છે આપણી સોસાયટીમાં. એટલે અમે લોકો હવે આજે અહીંયા ગ્રેજ્યુએટ થઈ રહ્યા છે એ વસ્તુની અમને બહુ ખુશી છે અને અમે લોકો બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરીએ છીએ પોતા માટે અને ઇવન અમારા પેરેન્ટ્સ માટે અમે બહુ થેન્કફુલ છે કે એમને અમને સરખો રસ્તો બતાવ્યો અમને. અને કોલેજ માટે બી અમે બહુ થેન્કફુલ છે કે ફૂલ એન્ટાયર 5 યર્સ એમને અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે અને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે બી અમે બહુ થેન્કફુલ છે. અને અમે જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે દાહોદ બહુ બેકવર્ડ ગણાતું હતું કે અહીંયા લોકોનું એજ્યુકેશન એટલું નથી હોતું અને ટ્રાઇબલ પોપ્યુલેશન હોય છે, પણ આટલા 5 વર્ષમાં અમે દાહોદને બહુ ડેવલપ થતા જોયું છે. બધા રોડ્સથી લઈને બહુ બધી સ્કૂલ્સ બની છે અહીંયા અને અહીંયા લોકોને એજ્યુકેશનને લઈને માઇન્ડસેટ બી સારું થયું છે અને સ્માર્ટ સિટીમાં ડેવલપ થયું છે દાહોદ. आज 25 अप्रैल 2024 को हमारे कॉलेज में जो 2018 बैच के स्टूडेंट थे, जो जिनको हम लोग पायनियर बैच बोलते हैं, उनका पहला कॉलेज का फर्स्ट ग्रेजुएशन डे सेरेमनी हम लोगों ने हमारे कॉलेज कैंपस में सेलिब्रेट किया, जिसमें हम लोगों ने जो डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शन जिन बच्चों को मिला था उनको गोल्ड मेडल और बाकी सर्टिफिकेट्स हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए, एक एक को बुला करके। हर एक बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में आए थे। काफ़ी अच्छा रहा ये कार्यक्रम और काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये कार्यक्रम। इन बच्चों ने अपना इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिया है, अभी वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे कहीं। थैंक यू सो मच। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।